સાથે જ આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે બ્રિગેડ एंटरप्राइजेस CFO जयंत मनबाटकर. जयंत सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ से जो न्यू लॉन्चेस हमने देखे इन Q3 FY25, एक सक्सेस हमको मिला, वो क्वार्टर को एक लीड किया, ड्राइव किया यहाँ से. तो अभी यहाँ पर अगर देखने जाए व्हाट विल लीड टू द नेक्स्ट बम्प इन सेल्स ओवर द ईयर, नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें, और साथ ही जानना चाहेंगे Q4 FY25 और 26 के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? So thank you so much for getting me on this interaction on channel. As you rightly said, Q3 में हैदराबाद का हमारा जो लॉन्च हुआ वो बहुत अच्छा रहा. लगभग 1000 करोड़ का सेल वहाँ रिकॉर्ड हो गया. कोकापेट पे जो हमारा प्रोजेक्ट है. Consistently going forward also we will see significant contribution of new launches to the pre-sales maybe in Q4 as well as going forward in the next year. We don't give any guidance, but as a proportion, generally we will see more than 50% of the sales coming in from new launches. So the driving factor always will continue as a new launches in the residential sector. जी, डेफिनेटली. जयंत सर, आगे जानना चाहेंगे यहाँ से व्हाट इज़ अ एस्टिमेटेड इन्वेंट्री लेवल अगर बात करें तो रेजिडेंशियल सेगमेंट के लिए स्पेशली, और एक यहाँ से देखने जाए तो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस जो है फॉर द नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ से क्या पोटेंशियल देख रहे हैं आप इसमें? So inventory as we speak is close to about maybe 2 million square foot, which is partly into finished products and also another 2 million which is on ongoing projects. So that inventory will continue to sell and further sales will be added because of the new launches that we have. ओके. और कलेक्शन के फ्रंट पर अगर बात करें जयंत सर, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं ऑन YOY बेसिस, बट QOQ बेसिस पर एक डिक्लाइन देख रहे हैं. तो अगर देखने जाए आगे तो व्हाट विल द कैश फ्लो लुक लाइक इन दैट केस? So last 3 quarters अगर हम कलेक्शन की बात करें तो 27 to 31% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर पे देखा है. Q1, Q2 as well as Q3. Q3 also has about 27% growth over last year same quarter, and that trend is continuing because of the new launches, because of more pre-sales, the growth which is what we have seen in pre-sales. So क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करेंगे तो इतना करेक्ट कंपैरिजन नहीं है क्योंकि माइलस्टोन के बेसिस पे कलेक्शन होता है. बट व्हाट वी रियली लुक एट इज द ग्रोथ दैट वी आर गेटिंग इन कलेक्शन. सो हमारे लिए एज वेल एज अदर प्लेयर्स इन रेसिडेंशियल बिजनेस, everybody is witnessing a very good growth in collections, very prompt collections that are being done. So it's a very good and healthy sign of business. और लीजिंग पोर्टफोलियो की अगर सर बात करें जयंत सर, तो यहाँ पर हमने एक जो ऑक्यूपेंसी है, एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन हमने देखा है. तो रेंट पोटेंशियल या फिर रेंटल इनकम पोटेंशियल क्या देख रहे हैं फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स दैट आर सपोज टू बी लॉन्च्ड? हमारा जो करंट पोर्टफोलियो है 8.7 मिलियन स्क्वायर फीट का, उसमें consistently we are 98-99% occupancy that we are seeing. Going forward, projects which are close to completion will also come for operations जो हम अगले क्वार्टर में करंट मतलब Q4 में देखेंगे. So we'll be around 1 million square foot that will be under leasing. And again, various projects which are there at different life cycle in terms of the construction and completion, they will also come up in the next year for leasing. So as we today really see about 3 million square foot का हमारा ongoing construction चल रहा है commercial projects में, they will also come and then get into leasing activity, and that's going to be a consistent feature of our vertical. ओके सर. एंड विद द न्यू चेन्नई माउंट रोड प्रोजेक्ट पूछना चाहेंगे जियोग्राफी फ्रंट पर, चेन्नई कैसा है और वर्सेस बेंगलुरु अगर देखने जाए तो क्या प्राइसेस हायर है वहाँ पर? चेन्नई एंड बैंगलोर अगर हम मार्केट साइज की बात करेंगे तो बैंगलोर हैज बीन ऑलवेज अबाउट 50 million square foot market on annual basis. Chennai has been around 28 to 30 million square foot on annual basis.
Prices in Bangalore were traditionally lower as compared to Chennai, but in last 18-24 months, Bangalore has really caught up and the prices have more or less become similar. In terms of sales velocity, both are extremely good. In Chennai, we really find a lot of unmet need for good housing, which is to be provided by the reputed and trustworthy brands. And that is where we have really seen the opportunity and experienced that momentum when we have sold our projects, whether it is Xanadu, whether it is a project like Mount Road, whether it is a project like World Trade Center. All of these projects हमने बहुत अच्छा experience किया है. And both markets we continue to be very positive about. Okay, and numbers के फ्रंट पर सर जानना चाहेंगे हाउ आर द नंबर्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और ARR कैसा है, गाइडेंस ग्रोथ के लिए आप क्या देंगे? हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं माफी चाहूंगा बिकॉज वी हैव फाइल्ड अ DRHP एंड वी आर गवर्न्ड बाय द पब्लिसिटी गाइडलाइंस, सो वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी. ओके सर, और सर डेट के फ्रंट पर अभी आगे जानना चाहेंगे जॉइंट सर. एज ऑफ December 24 डेट स्टूड एट 1127 करोड़. अभी यहाँ से क्या एक आउटलुक लेकर चल रहे हैं ऑन डेट? Debt, when we talk about 1127 crore is the net debt. Okay. And this net debt is, in terms of debt equity ratio, will be about 0.018 in terms of the net debt equity ratio. Going forward also, as we have always said in the past, we will continue to be very cautious about the exposure and the debt equity ratio, considering the nature of the operations and the sector. We will generally be always below 1. At times, temporarily, we may go above 1:1 as a debt equity ratio, but generally we'll try to be cautious and below 1. And even if you see last 12 years history, that is something which we can specifically say about how Brigade has always been on this subject. And we will consistently follow that financial discipline. राइट सर. जैन सर, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस. एक तो जानना चाहेंगे सर, बेंगलुरु में अभी रियल एस्टेट मार्केट को लेकर आप क्या आउटलुक रख रहे हैं, क्योंकि स्पेशली गिवन दैट वी आर सीइंग सम स्लो डाउन इन लॉन्च मोमेंटम और साथ ही जो देख रहे हैं सम डिले इन अप्रूवल्स, तो इसके ऊपर ओवरऑल एक आउटलुक जानना चाहेंगे रियल एस्टेट मार्केट में. Approvals are getting delayed than expected. However, that is part of our business, and consistently we are following up on that and getting it approval. This same thing which is delaying the approval is actually resulting into new launches, and new launches also are accordingly getting delayed. But from our side, we are keeping all the readiness for the launch, and the moment approval comes, we are launching. A good thing is that when we launch the project, जब भी हम launch करते हैं, तो हमें जो मोमेंटम मिलता है, जो बायर का इंटरेस्ट दिखता है, that is absolutely continuing. We do not see any kind of slowdown in that. क्योंकि जहाँ तक हमारा selection of the site and location and whatever is the offering to the customer aligns to their requirements, momentum अभी भी अच्छा है दोनों मार्केट में, whether it is चेन्नई और बैंगलोर. So maybe एक क्वार्टर इधर उधर लॉन्च हो सकता है, but the overall velocity as well as the sales scenario momentum is very positive. ओके. लास्टली जैन से जानना चाहेंगे, सैटरडे को हमने जो एक बजट अनाउंसमेंट देखा 425, तो ओवरऑल बजट को आपने कैसे देखा, स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री? रियल एस्टेट इंडस्ट्री डायरेक्टली अगर कुछ भी नहीं है बजट में, फिर भी देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड. First thing which everybody has spoken about is the reduction in tax rates, and up to 12 lakh rupees, if the taxpayer has an income, there is no tax. In case of salaried income, 12,75,000 तक कोई tax नहीं है. Similarly, because the tax rates are progressive, अगर कोई taxpayer 24 lakh का अगर income है, then the saving in terms of tax or reduction in terms of the tax will be around 1,10,000. And if you take a household with husband, wife both working, then this saving will be like 1,50,000 to 2,20,000 on an annual basis, which is very good from the real estate as well as other sectors. Second point, what we have seen is that focus on developing some 50 tourism destinations and focus on Udan scheme extension. This will also really give a lot of boost in terms of real estate in these cities because of the better connectivity as well as
टोटल ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. सिंप्लीफिकेशन इन TCS रूल्स इज अनदर वेरी पॉजिटिव because the threshold has been increased from 7 lakh to 10 lakh rupees. और lastly जो mergers and acquisitions के लिए framework है वो they are going to simplify as well as ensure that the approvals are on a quicker basis. Fast track mergers will be on a fast track basis, quicker approvals. Now this is something which will really help real estate industry as well as all other sectors to consolidate in a good manner. Only one downside that we have seen is the retrospective amendment in terms of Section 17(5)(d) of the GST Act, where there was one hope which came from Supreme Court judgment, which is again going away, and that is something which will really have some impact on the GST for commercial projects. So overall basis, I think the government is very clear in terms of walking the path to achieve our 8% growth target for 2047, whatever has been achieved. Few years we will be tough. It will be tough. Not everybody will get everything what is required. But as long as the economy grows, I think it is good for all sectors, including real estate sector. राइट सर, काफ़ी अच्छा सर आपके साथ डिस्कशन रहा, काफ़ी डिटेल्स भी आपने शेयर की एंड इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू जयंत सर. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स. थैंक यू अगेन सर. થેન્ક યુ. બાય સર. તો આ રીતે બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝીસના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ અને ઓવરઓલ એક સરસ